Hello, Anant. Can you hear my voice now? Yes, yes. So let's continue with the question which we were discussing. The question was with respect to what are the main features of the Vedic society and religion. As I told you, simple. You need to write around 4 to 5 features. One is Vedic society was based on the Vedas. It was a tribal society. Cow was the important animal of the society. Then society was egalitarian, or it was divided on the basis of caste. Divided on the basis of caste. Yes, later in the later part it has become so yajna, rituals. These were the important part of their religion, right? The family names were associated with the gotra, etc. So these were you need to write. So what are the main features of Vedic society and religion? You can write it down. Second question, second part. Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? है या नहीं इंडिया की सोसाइटी में the features of Indian society is still prevailing in India or not? Even today cow is an important animal in India, right? Even today the caste system, the varna system which was there during the Vedic society is still continued. Even today India, some people they do yajnas, they do the rituals. So yes, some of these features are still prevailing in India and very much prevailing in India. Simple question, got it? Am I audible? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे आंसर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. पीरियडिक वाइज हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमने देखा है कि व्हाट वेर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी. सो स्पेशली टेक्नोलॉजीज लाइक आर्किटेक्चर की जो टेक्नोलॉजीज है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है. वॉर टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ they were introduced in India during the Sultanate period. And architecture में different types of the new features like dome, then arc, then vault, then minar, and then पेंटिंग कैसे बनाया जाए, केमिकल कैसे इस्तेमाल किया जाए. All these technological changes have been introduced in India during the Sultanate period. And how did those technological changes influence the Indian society? Indian society पे इसका क्या असर हो गया? So because of these technological changes, कारखानाs were started in India. Urbanization started in India during Sultanate period. New cities like Delhi, which were cosmopolitan cities. The cosmopolitan cities like Delhi, Bidar, Hyderabad, ऐसे कुछ सिटीज बन गए थे कि जिसकी वजह से इंडिया में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड इट हैज बीन मैनेज्ड. तो इंडिया के सोसाइटी पे इकोनॉमिक के कैसे उसके चेंजेस हो गए, वेयरिंग पैटर्न पे कैसे चेंजेस हो गए, क्लोथिंग पैटर्न पे कैसे चेंजेस हो गए. दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट. क्लियर? आई थिंक सर जैसे आर्किटेक्चरल में सल्तनत पीरियड के फीचर्स और वो भी दिखाए गए थे डिजाइन में डिफरेंट टाइप्स, राइट. उसका जो अभी करंट में इंडियन सोसाइटी पर इफेक्ट है वो भी इसमें हम डाल सकते हैं. राइट. एक हिस्ट्री है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि क्या हमें मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री उसे मिटाना चाहिए. many people believe that we don't need to teach सुल्तान हिस्ट्री इन इंडिया और मुगल हिस्ट्री इन इंडिया. बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं ना कि हमें हमारे जो हमारे मतलब जो इंडिया के जो दूसरे हीरोज हैं, हिस्टोरिकल हीरोज लाइक महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज या बाकी के जो लोग वही पढ़ाना चाहिए और इनके दिस इज सर ओनली पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाना चाहिए. ऐसे डिबेट चल रहा है. अब मुगल पीरियड और सल्तनत पीरियड के जितने भी सारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए यू कैन नॉट वाइप इट आउट. Yes, Anand, बोलिए. Actually, it's only political controversy, but in real, there is no factors like. सेम वैसे ही है. देखिए, क्या आपको लगता है कि सल्तनत पीरियड में जो चीजें इंडिया में हुई थी वो आज भी इंडिया के सोसाइटी में वो चलती हैं? ये अगर सर हम वैसे भी जैसे इसमें अभी क्वेश्चन में भी दिया है तो अगर हम आर्किटेक्चरल टेक्निक के और नाउ जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं उनका बेस वहीं से हिस्ट्री से ही मिला है. आज भी हम आर्किटेक्चरल फीचर्स यूज करते हैं.
many no ancient times से see even ancient period during Vedic society Gupta period में Maurya period में भी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो अभी आज भी चल रहा है लेकिन medieval period में भी जो सुल्तान्स थे they have brought some foreign features Indian society is a melting pot we always say like जो भी चीजें बाहर से आई वो इंडिया में मिक्सअप होगी इंडिया में वो मेल्ट हो गया और उन्होंने ऐसे नहीं है कि the invaders who came to India, whether it is Aryans or whether it is Sultans, whether it is Mughals, whether it is British, or whether it is even Chinese, बहुत सारे लोग जो सेंट्रल एशिया से जो लगाए थे, everybody has contributed something to Indian society, Indian economy. So that's what एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि how did those technological changes has influenced in India, right? इंडिया में बहुत सारे इंडिया के फूड आर्टिकल्स में इसका असर हो गया है इंडिया में जो कपड़े पहनने का जो तरीका है वो इनके बाद में चेंज हो गया है बहुत सारे बिल्डिंग्स इंडिया में जो बांधे गए थे बाद में दैट वाज बिकॉज ऑफ दोस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड पेंटिंग इन इंडिया यू कैन से इंडिया में पोर्ट्रेट पेंटिंग था ही नहीं इंडिया में तो व्हेन द sultans came in India they have brought history in India सबसे important चीज हम देखेंगे how to write history that was also introduced in India by the by those historians which have been brought to India right वो बहुत सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो हम देख सकते हैं got it yes. So that's why the question has been asked yeah so context अगर आपको समझ में आ गया कि क्यों क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर भी अपने आप बन जाता है एग्जाम next how did the colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial operation colonialism is a different topic and the contributors various contributions and contributors from various part of the country एक topic है GS paper 1 में in India's freedom movement so tribal का response क्या था colonial operation the question you could write easily from Grover and Grover में एक separate topic है the rise of peasants and tribals sorry revolts of peasants and tribals even before Bahadur Shah Zafar Tata Tope and the Peshwe ये जो revolt of 1857 था इंडिया में उससे पहले भी even before that in various parts of the country the tribals have revolted against the against the British rule in India because it were the tribals and peasants who have been affected more by the colonial rule than those these kings in India. In fact, many kings, many Western educated Indian intelligentsia, they have supported and they wanted the continuance of the British rule in India. इंडिया के बहुत सारे जो राजा थे बहुत सारे जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे उन्हें ऐसे लगता था कि इंडिया में ब्रिटिश का रूल कंटिन्यू होना चाहिए बट द पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड नेगेटिवली these were the tribals and these were the peasants in India. So what was the response, tribal response to the colonial operations? You can give an example of Birsa Munda. We can give the example of Vasudev Burman Fatke in Maharashtra. We can also give the examples like जो tribal वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइबल्स ने उनके खिलाफ में रिवोल्ट किया था. So you can give 4 to 5 examples of tribal revolters. Like there was some communities in South India as well who have revolted against the British in India. Right, Sagar? Bahirji Naik was the tribal who have been revolted against the British in India. So many tribals have revolted against these people. But उनका जो revolt था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया. वो भी आपको लिखना है. How did the colonial rule affect the tribal in India and what was the tribal response to the colonial operation? Got it? Yes. Sagar, you want to say something? Yes. No, got it, sir. Okay. The next question. Comment on the resource potentials of long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in this area. Do you remember blue economy? Continuously there were articles written in Indian Express with respect to blue economy. Like blue economy क्या है सागर? Yes sir, blue economy जो ओशन में हमें रिसोर्सेस मिलते हैं सर वो हमें लेकर ओशन के थ्रू
Yes. So what are the resources potential along the long coastline? India is having a very long coastline, right, from Gujarat to West Bengal. So what are the potential? कौन से resources potential है ये आपको लिखना है. You can write around 4 to 5 lines. Then highlight the status of natural hazard preparedness in this area. Disaster and disaster management. Many articles have been written in Indian Express, especially जब गुजरात में एक साइक्लोन आया था recent. Do you remember? There was one cyclone in Gujarat. तो उस समय में recently मुझे लगता है 2-3 months back only there was a cyclone in Gujarat. I don't remember the name of that cyclone. I think it is वायु ऐसा ही कुछ नाम था उसका. तो उस समय में हमने देखा था कि India has done very well, a very good job in managing that cyclone. So what natural hazard preparedness is needed in this area? Now actually disaster and disaster management is a paper 3 topic, but यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कोस्टलाइन को कनेक्ट करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. Got it? चलिए, now next question. Identify and discuss the factors responsible for diversity of natural vegetation in India. Discuss किया है हमने. Vegetation geography of India में हमने discuss किया था. In India there are around 7 to 8 different types of natural vegetation, like deciduous, moist deciduous, dry deciduous, evergreen, semi-evergreen, mountain forest, and mangroves in India. There are different types of vegetation in India. So which are those? Identify and discuss the factors responsible for the diversity of natural vegetation in India. Assess the significance of wildlife sanctuaries in rainforest regions of India. Wildlife sanctuaries. Recently हमने discuss किया था जब मैंने ecology and environment के जब हम topic discuss कर रहे थे, we have discussed about it, like wildlife sanctuaries to protect some of the animals like tiger, elephant, rhinoceros. These we have all discussed. So what is the significance of those wildlife sanctuaries in rainforest region of India? Rainforest regions, कहाँ पर इंडिया में rainforest कहाँ पाए जाते हैं? North Eastern India and South India. Some of the rainforest like Nilgiri forest, etc. So what is the significance of those wildlife sanctuaries? That's what you are supposed to write it. A very simple question. You could write the answer of this question. First part you can write by reading NCERT or the notes which I have given it to you. Second, significance of wildlife sanctuaries and rainforest in India. कोई भी एक basic environmental studies की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो you could write the answer of this question. Clear? Why did human development fail to keep pace with economic development in India? इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. लाइक स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट. आई ऑलवेज से कि व्हाट इज द रीजन. दो देयर आर 2 रीजंस. वन इज एजुकेशन सिस्टम, सेकंड प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन, as well as lack of skill development in India. So why did human development fail to keep pace with economic development in India? There are some geographical reasons. There are some, you can say, social reasons as well. कुछ सोशल, हमारे इंडिया में कुछ सोशल प्रैक्टिसेस ऐसे हैं, वो भी है. रोल ऑफ सोशल मीडिया. People are not very much you can say keen on getting the skills. पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली पीपल आर दे आर इंडल्ज्ड इन सोशल मीडिया में बहुत सारे वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो ह्यूमन डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट. करेक्ट? अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम बीइंग नेट food importer in 1960, India was the net food exporter to the world. Provide reasons. Which technological mission was instrumental in making India a self-sufficient country and food exporter? 1960s में एक technological mission हुआ. Which was that? Yes, Saad, Omkar. Which technological mission has helped India to become a net food exporter? Sir, from being a net food importer. Simple है, everybody knows it. Green revolution हुआ था उस समय. Yes sir. Green revolutions which have been developed in India. Green revolution, irrigation facilities,
scientific research, right? Development of high yielding varieties, use of chemical fertilizer, use of irrigation system, like बहुत सारे irrigation system बनाए गए थे, land reforms, land sealing, land aggregation उस समय में किया गया था. So provide reasons for this. A very simple questions. Got it? Next, does urbanization lead more segregation and marginalization of poor in Indian metropolises? क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और अधिक पृथक्करण और हाशिए पे ले जाता है? What do you think? Yes or no? Segregation and marginalization. Yes. कोरोना पीरियड में हमने देखा था कि how those people have been segregated and marginalized. And हमने ये भी देखा था कि पिछले कुछ दिनों से अर्बन पुअर की संख्या बढ़ती जा रही है कंपेयर टू द रूरल एरिया. इन रूरल एरिया वेल्थ बढ़ता जा रहा है, prosperity बढ़ती जा रही है, but in urban areas poverty is increasing. There is marginalization. Next is, why is caste identity in India both fluid and static? इंडिया में caste identity fluid भी और static भी. कितना भी हो जाए हम अपनी कास्ट नहीं छोड़ते. We mix up with other people, but still we have that caste consciousness. So that is what is mentioned here. Why is caste identity in India both fluid and static? Last question है, discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism. Post-liberal economy इंडिया के एथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म पे कैसे उसका असर हुआ है. It has happened not only in India, it has happened in America, it has happened in other parts of the world, it has happened in UK, it has happened in Australia, it has happened in France, it has happened in Latin American countries. तो कैसे ये एथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म पे इसका असर हुआ है पोस्ट लिबरल इकोनॉमी. लिबरलाइजेशन मतलब कब हुआ है इंडिया में लिबरलाइजेशन? व्हेन इंडियन इकोनॉमी गॉट लिबरलाइज्ड? 1991, sir. Just the effect of liberalization on Indian society एक टॉपिक है in GS पेपर 1. So that's what you need to. मुझे लगता है एक या दो क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, जैसे कि one there was a very specific question that with respect to what are fjords, how are the fjords formed, and why do they constitute some of the most picturesque areas of the world. This one question. And one specific question, that is, what were the ideological differences between Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi? Remaining 18 questions were very easy. Anybody who has studied the basics of, basic जिसने भी पढ़ा है, they could be able to write the answer of this question. Right? मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ दिनों से, मतलब पिछले 2-3 सालों में, this was one of the easiest paper of GS paper 1. अगर आप पिछले 2-3 साल का अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पेपर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इस साल बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यू कुड राइट बाय जस्ट रीडिंग दिस थिंग, स्पेशली सोसाइटी वाले क्वेश्चन, इकोनॉमी वाले क्वेश्चन. राइट? आपको कोई स्पेसिफिक किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट यूज कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड इन राइटिंग द आंसर. Very basic question they have asked. Yes, Sagar. लेकिन वही है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हम. प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करते तो ये इजी क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखते. एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन भी सर वही है जो करंट में जो टॉपिक्स रिसेंट से करंट अफेयर से रिलेटेड है. राइट. चल रहा है तो बेसिक भी लिबरलाइजेशन इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो वही बेसिक पूछा गया है. राइट. आइडियोलॉजी में भी क्योंकि कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी, तो उसी से रिलेटेड थे, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया. तो अभी जस्ट आपको एक स्किल, आंसर राइटिंग स्किल आपके पास में होना चाहिए. हाउ टू राइट द आंसर विद इन गिवन वर्ड लिमिट, हाउ टू प्रेजेंट द आइडियाज, दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अगर होगा भी तो हमें कंट्रोवर्शियल आंसर नहीं लिखना है. We need to write the answer in a as a future civil servant. Yes, sir.
यस ओमकार, यस यू आर राइट। नो, अगर आपको सिलेबस पता है और बेसिक प्रिपरेशन अगर आपने की है, बेसिक हिस्ट्री पढ़ा है, बेसिक ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, बेसिक इंडियन सोसाइटी के फीचर्स को आपने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि आंसर दिस क्वेश्चन आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू कैन स्टार्ट राइट 2 or 3 आंसर्स इन अ डे। रोज आप 1-2 क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करो। आप आंसर लिखो, मैं भी मेरा एक आंसर आपको लिख कर देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कि कैसे आंसर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हाउ टू राइट द आंसर, दैट यू कैन डू। यस ठीक है, तो अगर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर मेंस एग्जाम प्रिपरेशन, स्टार्ट इट विद राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सागर, ओमकार, साथ कुछ पूछना है आपको? मुझे लगता है कोई तो लेफ्ट हो गया। हु हैज लेफ्ट? I think Munir has not joined the second session. ठीक है, shall we start? और आपको कुछ पूछना है? ठीक है, then we'll stop here now. GS paper 2 that we will discuss tomorrow. Okay. Do you want me to start newspaper discussion? जैसे मैं रोज every day I used to have the newspaper discussion. Because why I have stopped it, because people were not taking it seriously, और आप regularly join नहीं कर रहे थे, you are not making the notes, you are not doing the background preparation. That's what I have said, because I felt that I'm unnecessarily I'm wasting my time and energy. No sir, it was very helpful. Yes, अगर आप चाहते हैं तो I can start it once again, because इस बहाने से क्या हो जाएगा, मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाएगा, because अभी आप लोगों को मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो even I am skipping reading newspaper for the last 1 month. Even I have not read the newspaper. नहीं सर, आप स्टार्ट करेंगे, हमारा भी रेगुलराइजेशन हो जाएगा उसमें। कितने लोगों को चाहिए न्यूज़पेपर डिस्कशन? सागर, ओमकार? ठीक है, Yes, sir. so let's start it from tomorrow. Yes sir. Morning 8 to 9 is okay? Yes, sir. 9 to 10 kg. Yes, sir. 8 to 9 is. To 9 is okay. 9 to 10. Actually 8 to 9 is थोड़ा difficult है सर मेरे लिए, इसलिए। ठीक है, चलिए, we will have it. ऑफिस के लिए ना सर। So you attend the newspaper in office? Yes sir. ठीक है, चलिए, we will have it between 9 and 10. Yes sir. Fine. So good night to all of you. Take care. See you tomorrow morning. Morning we'll have newspaper. Evening we will have GS paper.